Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. We start with Nifty. So Nifty, we saw the close at 17,676, 656 on the Tuesday session. This was mainly because of the profit booking which was seen on that day. And further that what we have seen in Nifty, it has already rallied close to 5% in that over in the last 9 trading session, and it did made a high of 17,811. So what we see technically is during this entire trading session, there was a breakaway gap which was seen on the 28th October, and that gap was at 17,421. So this remains the support for the Nifty. For the coming trading session, we sense this continuation of the upside can be seen till 17,900, 18,000 level. So this momentum from 17,400 to 18,000 is the range for the Nifty, and on the way down 17,400, that should be the support for the Nifty. Further, this 18,000 will also act as a resistance because there is a lot of call writing which has been seen. Today being a monthly expiry. So gradually, if the upside will be capped at 18,000 on the maximum of the higher side. Being an expiry day, we believe the Nifty to expire within the range of 17,800 to 17,900. So that would be the range for the Nifty. Coming to Bank Nifty, the close was 41,112. And basically, on last session, we saw there was a selling was seen in the private banks, basically ICICI, Axis, and HDFC. So this profit booking was seen in this counter. So, but then having said that, the stocks have already rallied the higher side. So a little bit correction should be viewed as a healthy buying opportunity. Overall, if we see 41,500 is the strike price where the call writing is been seen. So that will again act as a resistance for the bank Nifty. So once above 41,500, there will be fresh buying. But right now, at this scenario, 41,500 will act as a resistance. On the lower level, the put writing for the bank Nifty is seen at 40,500. So that will act as a support. So the range for the bank Nifty for the next couple of days is 40,500 and 41,500. So this is the 1,000 point range for the bank Nifty. Overall, the bias for the Nifty and Bank Nifty both remains positive. Decline should be viewed for the buying opportunity as post expiry, monthly expiry. If there are strong recovery of the market, then we are heading for the fresh ups, a new momentum on the higher side. So bias are quite very positive. Few stocks technically which are looking very good on charts are L&T, Hindustan Aeronautic Limited, Tech Mahindra, and NTPC. So these are the daily breakouts. So this can be played for the 3-4 days kind of trading move. So we are quite positive on this stock. Coming to derivatives data, on Tuesday we saw the long unwindings in the Nifty future, which was a tune of 2.49%. And overall, it was a decline of 37 lakh shares. So same thing, the major additions were seen in the 18,000 call option, and on the put option, 17,500 was the major additions. Whereas in the Bank Nifty, there were shorts were added in the Bank Nifty as per the data on the Tuesday session to the tune of 5.29%, which was an addition from 1,18,000 shares. Same, the call rating was seen at 41,500 strike price, and the put rating was seen as 41,000 strike price. So this might act as a support. That a few coming to rollover. As on Friday, the rollover for the Nifty stands at 50%, and the previous series the rollover was at 78%. And for the Bank Nifty, the rollover is 57%, and the previous rollover was 82%. So overall, the bias continues to remain positive, buy on decline. Then lastly, the FI data. So the cash, the FIs are told 247 crores, and in DI has bought 872 crores. Whereas in the FNO segment, they have went long by 1657 contracts, and the net long ratio, long short ratio has now improved till 34 levels. And the overall short position in the market from the FIS hedge point of view is minus 57,000 contracts, which is okay to see. So in the coming session, if this
short positions are recovered, then the fresh buying from the FIs can be seen in the system, which will also support to the market. So overall, the view and sentiment remains bullish with the buy on declines kind of approach for the day. Post expiry, we will have a fresh view on the indexes. That's all from the technical and derivatives. Over to Archana Madam for further updates. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with the results. So, Chennai Petroleum Corporation reported the numbers. So, the company recorded 99% sequential decline in standalone profit at 28 crore for this quarter, which was impacted by the windfall tax on exports. Revenue declined nearly 17% QOQ to 22,800 crores. The Government of India on July 1 levied the duties on export of petroleum products at the rates notified on fortnightly basis, which have been reduced in the refinery transfer pricing, and this has resulted in the lower revenue and profitability of the quarter. On Gland Pharma, the company has reported 20% YOY decline in profit at 241 crores, and for this quarter, which was dented by the weak top line as well as the operating performance. Revenue for the quarter fell by 3% to 1,044 crore on YOY basis. On Dabur India, the company has announced acquisition of 51% stake in Bacha Masala for rupees 587 crore, and the balance 49% stake will be acquired after 5 years. Bacha Masala is engaged in the business of manufacturing, marketing, and export of ground spices, blended spices, and seasonings. Dabur ended for this Q2. The consolidated profit was at 490 crore, which was down by 3% compared to last quarter same year. Despite the strong headwinds, consolidated revenue came in at 2,900 crores, increased by 6% YOY. On Century Textiles, the company recorded consolidated profit at 70 crore for this quarter, which is up by 118%. Profit reported 32 crore in the same quarter last year. Revenue during the quarter grew by 20% YOY to 1,240 crores, which was aided by higher pulp and paper business. DLF, the company plans to launch new projects worth 3,500 crores, mainly in Gurgaon and Panchkula during the second half of this financial year. On Embassy Office Parks REIT, the company trust will invest 2,200 crores in the next 4 years to develop premium workspaces. On Trident, the company has commissioned a new solar power project of 8.87 megawatt at Budni, Madhya Pradesh for captive use at its locally based manufacturing facilities. And lastly, on PCBL has reported 4.6% YOY decline in consolidated profit at 116 crores, and which was dented by the higher input costs. Revenue for the quarter came in at 1,600 crores, increased by 52% compared to same quarter last year. So that's it from my side. I would request Hitendra to take over. Thank you, and over to Hitendra. Yeah, thank you, Mama. Good morning, everyone. We'll see go further. Starting with IFL Finance. IFL Finance reported their earnings. They reported 36% added consolidated net profit to 397 crores in September quarter. This NBFC also has posted a net profit of 292 crore in the same quarter last year. The company's total income also grew during this period from 2051 against 1,713 crore. They said. Secondly, Tata Steel company has egged the pact with American car maker Ford to supply and service green steel from Netherlands-based plant as the unit shifts to hydrogen-based steel making. This carbon steel line is 100% carbon neutral, hence this makes Ford's first customer to offtake the green steel that Tata plans to produce green hydrogen. Third, Glenmark Pharma, the US FDA has issued an import alert for the Glenmark Pharma's manufacturing plant at Bundy. This means that the drugs manufactured in this plant can be retained without any physical examination. The management also said it will cooperate with the authorities to and the regulators to resolve the import alert at the earliest. For telecom stocks, the communication minister said that the telecom companies must raise the 5G tower installation per week to at least 10,000 per week. Currently, it is at 2,500 per week. And around 8,000 towers is ready to help the telcos to scale to 5G infrastructure. Tata Power Solar System has also launched cost-efficient solar off-grid solution. This solution is a combination of solar modules, inverters, and batteries and will deliver a renewable energy backup times in grid supply shortages. Zydus Lifesciences also has received an approval of mecafungin for injection. Mecafungin for injection had annual sales of 99 million in the US, according to IQVIA.
HUL, the company said that recall of the dry shampoo products manufactured under brands like Dove, Tresemme, and other brands in the US and Canada markets, but this will not impact the Indian market. And the company said it's not manufacture or sell the products in this Indian markets also. This dry shampoo. Aluwalia contract has also got an order of 103 crore and it has secured orders for construction of work of MET campus in the Hyderabad region. And Ritan and Salva Education for 60 crores in the construction in civil sector. And Muthoot Hospital for 43 crores. So the order for 2023 stand at 3,114 crores. Hero MotoCorp also said on Wednesday they announced plans to enter the Philippine market, which has partnered with the Terrafina Corporation of Philippines for the assembly and distribution of its vehicles. A part of the Columbia group of companies, and this will be exclusive assembly and distributor of Hero MotoCorp cycle in the Philippines. The company said in the filing. Without moment, the company has approved of providing corporate guarantee in favor of Standard Chartered Bank for a term loan facility proposed to be taken by subsidiary Blount Mobile UK for $15 million. This corporate guarantee will also be treated as a contingent liability for the company. In Power Finance Corporation, HDFC Mutual Fund has bought several schemes for 2.0% stake on October 21, and shareholding has reduced to 6.94 from 9.01. The company has also launched DLF. The company has launched new projects of 3,500 crore mainly in Gurugram and Panchkula region during the second half of this fiscal. For LT Foods, the company will meet on October 31st to discuss raising of fund and deregulation of shareholding framework for its subsidiary companies. Macrotech developers ICRA has assigned ICRA A plus stable rating to a company for this currently loan facility of 600 crores. And lastly, the Mahindra incorporated a wholly owned subsidiary Mahindra Electric Automobile, and it's also going to take its under four-wheeler passenger electrical vehicle business also in this. So that's it from my end. I'll hand over to Shataja for this. Thank you. Thank Thank you everyone. गुड मॉर्निंग। सभी हम लोग रिकॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स आए थे, उनका जो स्टैंडर्ड एंड प्रॉफिट है वो 27.88 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो 99% कुछ सिक्वेंशियल डिक्लाइन है ये क्वार्टर में। देन ये जो इम्पैक्ट हुआ है वो बेसिकली विंडफॉल टैक्स जो ऑन एक्सपोर्ट पे लगाया गया था उसके कारण उनका रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है नियरली 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 22,894 करोड़ ये क्वार्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 1 से मतलब थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे उस पे लीवे दिया गया है और ये रिड्यूस करेगा रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइसिंग और इससे क्या होगा कि लोअर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ये क्वार्टर के लिए। नेक्स्ट अपडेट है ग्लैंड फार्मा के ऊपर। कंपनी ने रिपोर्ट किया 20% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन प्रॉफिट में और रिपोर्ट किया प्रॉफिट 241.2 करोड़ सितंबर क्वार्टर में। और ये जो क्वार्टर में जो डिक्लाइन देखा गया है वो वीक टॉप लाइन और उनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था वो वीक था, उसके कारण उनका रेवेन्यू भी ये क्वार्टर में फॉल हो चुका है 3% से और रिपोर्ट किया 1044.4 करोड़। देन ओवरऑल उनका जो लोअर बिजनेस है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो उनका कोर मार्केट है यूएस, यूरोप और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने रिपोर्ट किया है 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेक्स्ट अपडेट है डाबर इंडिया के ऊपर। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो उनका जो एक्विजिशन है 51% स्टेक जो बादशाह मसाला में करेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो 587 करोड़ है और बैलेंस 49% जो स्टेक है वो अक्वायर करेंगे 5 इयर्स के बाद। और ये बादशाह मसाला का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग इवन एक्सपोर्ट करता है ग्राउंड स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस एंड सीजनिंग के ऊपर। और डाबर ने सेकेंड क्वार्टर जो फाइनेंशियल 23 है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 490.1 करोड़ का, जो 3% ईयर ऑन ईयर कंपेयर करे तो डाउन है। ये डिस्पाइट ऑफ मतलब स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस के भी अलावा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2,986.5 करोड़, जो 6% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट अपडेट है सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर एंड इंडस्ट्री के ऊपर। कंपनी ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 17 करोड़ का और उनका जो प्रॉफिट जो आया है वो 118 करोड़ से ऊपर आया है और उनका
इसके अलावा स्ट्रॉन्ग उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आया है। रेवेन्यू जो है क्वार्टर में ग्रो हो चुका है 20% ईयर ऑन ईयर, 1242 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो एडेड बाय पल्प एंड पेपर बिजनेस के यहाँ से आया है। नेक्स्ट अपडेट है डीएलएफ है। कंपनी ने प्लान किया है कि वो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जिसकी वर्थ होगी 3500 करोड़, जो मेनली गुड़गांव पंचकूला रहेगा ये सेकेंड हाफ के ये फिस्कल में। देन एम्बेसी ऑफिस पार्क्स राइट जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो इन्वेस्ट करेंगे 2200 करोड़ नेक्स्ट 4 years में, जो डेवलप करेंगे प्रीमियम वर्क स्पेसेस। नेक्स्ट अपडेट है ट्राइडेंट के ऊपर। ट्राइडेंट ने कंपनी ने कमीशन किया एक न्यू सोलर पावर प्रोजेक्ट 8.87 मेगा वाट, जो बुधनी में होगा मध्य प्रदेश में, जो बेसिकली कैपेसिटी यूज होगा लोकली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट अपडेट है जी एन सोनी के ऊपर। जी एन सोनी है, दोनों कंपनी ने अग्री किया है कि जो उनके 3 हिंदी चैनल है वो सेल करेंगे, जो बेसिकली एड्रेस कर रहे थे एंटी कंपटीशन जो कंसर्न था जो सीसीआई ने रेज किया था। ये जो 3 चैनल्स है वो बेसिकली सोल्ड करेंगे बिग मैजिक जो जनरल एंटरटेनमेंट कंपनी है, जी एक्शन, जी क्लासिक जो फिल्म चैनल है, और जो उनका वॉलंटरी मॉडिफिकेशन है वो रिस्पॉन्स अर्लियर रेज हुआ था सीसीआई से। तो ये कंबाइंड एंटिटी जो है इम्पैक्ट कर रही है कंपटीशन एनवायरनमेंट जो इंडस्ट्री में है, और उनका जो व्यूअरशिप है वो अराउंड शेयर कर रही है 36% हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। सो सीसीआई ने ऑर्डर किया था कि वो परचेसर है ये चैनल शुड नॉट बी अ स्टार इंडिया और बायोकॉम 18 शुड बी इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब ये इंडिपेंडेंट पार्टी होनी चाहिए थी। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू जो जी के ऊपर है। तो हमारा करंटली कोई फॉर्मल कवरेज नहीं है जी के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है हाँ माइक्रोटेक डेवलपर्स के ऊपर आईसीआर है, उन्होंने असाइन किया है कि A+ स्टेबल रेटिंग कंपनी को लोन फैसिलिटी जो वर्थ 600 करोड़ की है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने इनकॉर्पोरेटेड किया है होली ओन सब्सिडरी जो महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल है, जो 4 व्हीलर पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस अंडरटेक करती है। नेक्स्ट अपडेट है एलटी फूड के ऊपर। कंपनी का बोर्ड मीटिंग है 31 अक्टूबर को, जो डिस्कस करेंगी फंड रेजिंग के लिए और जो रीऑर्गेनाइजेशन उनका जो शेयर होल्डिंग फ्रेमवर्क है सब्सिडरी कंपनीज का उसके लिए। नेक्स्ट अपडेट है पीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, उन्होंने सेवरल स्कीम है वो सोल्ड की है 2.07% स्टेक कंपनी से ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन से अक्टूबर 21 में, और शेयर होल्डिंग पीएफसी का रिड्यूस होकर 6.94% हुआ है, और डाउन पहले जो था 9.1% था। देन राउट मोबाइल एक कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि जो कॉर्पोरेट गारंटी है 4 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टर्म लोन फैसिलिटी के लिए, उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है, और ये $15 मिलियन होगा, और ये कॉर्पोरेट गारंटी है वो ट्रीटेड होगी कॉग्निजेंट लायबिलिटी कंपनी के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है हीरो मोटो के ऊपर। हीरो मोटो ने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रही है कि वो एंटर करेंगी फिलीपींस मार्केट में, और जो पार्टनर होगा टेरा फर्मा मोटर्स कॉर्पोरेशन जो असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा व्हीकल्स, जो असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है व्हीकल्स का, और ये एक कोलंबियन ग्रुप ऑफ कंपनीज है टेरा फर्मा मोटर्स कॉर्पोरेशन। यह एक्सक्लूसिवली असेंबल है डिस्ट्रीब्यूशन और हीरो मोटो साइकिल्स फिलीपींस में एंटर कर रही है, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। नेक्स्ट अपडेट है टाटा स्टील के ऊपर। कंपनी एक पैक्ट साइन करी है अमेरिकन कार मेकर फोर्ड जो सप्लाई करती है ग्रीन स्टील फ्रॉम द नेदरलैंड जो नेदरलैंड बेस्ड जो प्लांट है वहां से, और ये यूनिट शिफ्ट होगा हाइड्रो बेस्ड स्टील मेकिंग कंपनी से, और ये कार्बन लाइट स्टील है वो 100% कार्बन न्यूट्रल है। सो जो फोर्ड का जो फर्स्ट कस्टमर है वो ऑफटेक ग्रीन स्टील टाटा स्टील प्लान करे कि वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन रूट से। नेक्स्ट अपडेट है ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर। यूएसएफडी ने एक इशू साइन किया है उनको जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर, जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बडी में, और ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग बडी प्लांट है वो डिटेन हुआ है विदाउट एनी फिजिकल इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन के कारण।
तो मैनेजमेंट ने बोला है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं यूएस हेल्थ रेगुलेटर के साथ और जल्दी जल्दी ये जो इंपोर्ट अलर्ट है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है टेलीकॉम स्टॉक के ऊपर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है अश्विन विश्वनाथ, उन्होंने बोला है कि टेलीकॉम कंपनी है वो रेज करेंगी 5G टॉवर्स इंस्टॉलेशन पर वीक, जो एटलीस्ट 10,000 पर वीक होगा फ्रॉम करंट। अभी जो है वो 2,500 पर वीक है। अराउंड 8,000 टॉवर्स रेडी होंगे जो हेल्प करेंगे टेलीकॉम्स को स्केल करने में और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। तो स्पीड जो है 5G का ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर ने एक लॉन्च किया कॉस्ट इफिशिएंट सोलर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन। जो ये सॉल्यूशन है वो कंबाइन सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर्स और बैटरीज का है जो डिलीवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी और बैकअप के टाइम पे वो ग्रिड सप्लाई शॉर्टेज का हेल्प करेगी। नेक्स्ट अपडेट है जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर। जाइडस को एक फाइनल अप्रूवल रिसीव हुआ है यूएसएफडीए से, जो उनका मिका ट्यूनगिन जो इंजेक्शन है उसके लिए। और ये इंजेक्शन बेसिकली एनुअल सेल्स यूएसडी 99 मिलियन यूनाइटेड स्टेट में करता है। और जो ये डेटा है वो एक्विया का डेटा है। देन नेक्स्ट अपडेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। कंपनी ने बोला कि यूनिलीवर का जो ड्राई शैम्पू प्रोडक्ट्स है और मैन्युफैक्चरिंग जो उनके ब्रांड्स है लाइक डव, ट्रेसमी एंड अदर ब्रांड्स, उसका रिकॉल किया गया है यूएस एंड कनाडा मार्केट्स में और जो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इंडिया में। और अकॉर्डिंग टू कंपनी है कि ये ज्यादा मैन्युफैक्चर और सेल प्रोडक्ट इम्पैक्ट मतलब इंडियन मार्केट में नहीं होगा। देन लास्ट अपडेट है अवुलिया कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 103 करोड़ का, जो सिक्योर ऑर्डर है कंस्ट्रक्शन वर्क जो एमईटी कैंपस है हैदराबाद वहां से मिला है। और ये ऑर्डर मिला है रितनाथ स्लेव एजुकेशन फाउंडेशन से जो वर्थ है 16 करोड़ का। और ये कंस्ट्रक्शन सिविल एंड स्ट्रक्चरल एक्सटर्नल डेवलपमेंट काम करेंगी। इवन मुथूट हॉस्पिटल फ्रॉम मुथूट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसकी जो वर्थ है वो 43 करोड़ की अप्रोक्स। तो ओवरऑल जो ऑर्डर उनका फ्लो है फिनेंशियल ईयर 22 और 23 में वो अभी 3,114.72 करोड़ है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.